Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, Festival of Exam is starting today with the exam of SBI Junior Associate. Many of our subscribers are appearing in the examination and they have prepared well, and I hope they will be going to perform excellent. Now there are candidates, those are having exam tomorrow, day after, and on the 13th of July. So how they should pursue their study in coming days, this video handles that. All those candidates, those are having exam tomorrow, will not attempt any mock test today. So no mock test for the candidates, those are appearing tomorrow. They will simply utilize the today time, half day for rest and half day to just brush up their weak areas. Yesterday evening I posted a video how they should spend the day. You should watch that video. Link is available in description, and continue your day for tomorrow show. So best wishes for your tomorrow examination. The candidates, those are appearing in exam on 12th and 13th July, they will attempt mock test number 15, SBI Junior Associate 2021 series. The link is available in description. Click the link, register your particulars, take half yearly, yearly or state bank specific plan. Even if you have not taken the plan till now, take it today, because along with pre, you are going to get the main exam mocks as well as for all future banking examination for the tenure for which you will take this plan. Maybe 6 months, maybe 1 year. So attempt your mock test, note down the weak areas, and then focus on your weak areas today. If you feel English is your weak area, spend entire day on English. If you feel your weak area is English and quant, spend time on these two subjects, distribute the time accordingly. And if you find that your weak area is all the three subjects, give equal time to all the three. So you can distribute your time depending upon which subjects need the focus most. This should be your strategy. That means if your exam is day after tomorrow or on 13th, then only you will attempt mock today. Otherwise, there is no need of attempting the mock test today. As far as current affair and banking financial economic awareness is concerned, this we will start immediately after your exam is over for Prem. So for today candidates whose exam will be over for Prem, I will advise them to go through the current affairs immediately. For current affairs, I have given the link in the description. Click the link, you will land up on an app, download the app, take current year plan, that is 2021 plan, apply coupon code AA03 and you will get 10% discount. For all the candidates, those will be appearing in today examination and through with the exam, they should immediately start reading of current affair, because from today evening I will be resuming our series of timetable for main examination. So the moment you are through with the exam, we will focus on mains. These people, those are now over with the pre-examination, they will also watch 10 to 15 videos from the Banking Financial Economic Awareness playlist. As far as health is concerned, I have given you an excellent playlist. Watch these videos and stay healthy. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. तो आज हमारा फेस्टिवल ऑफ एग्जाम स्टार्ट हो गया. आज पहला दिन है जब SBI जूनियर एसोसिएट के एग्ज़ाम हो रहे हैं. काफ़ी हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स आज इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी मुझे आशा है.
अब जिन लोगों का एग्ज़ाम कल, परसों और 13 तारीख को है, उनके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम कल है वो आज कोई भी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे। जिनका एग्ज़ाम 12 को है या 13 को है वो 15th नंबर मॉक टेस्ट SBI जूनियर एसोसिएट 2021 सीरीज़ का अटैम्प्ट करेंगे। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में दिया है। बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने आपको सजेस्ट किया है। जिन लोगों ने अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिया है, आज वो इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, हाफ ईयरली या ईयरली प्लान ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको मेंस के मॉक भी मिल रहे हैं और बाकी भी जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके आपको मॉक्स मिल रहे हैं। तो इसको आप जरूर ले लें, चाहे आपके पास जो मर्जी है, क्योंकि आप इसको लेने के बाद मुझे कम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैंने आपको सजेस्ट की है। फिर आपने क्या करना है कि पूरा दिन आपने उस सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो आपका वीक है। मान लो किसी का इंग्लिश वीक है, पूरा दिन इंग्लिश पे लगा दीजिए। किसी को लगता है उसका इंग्लिश और क्वांट 2 सब्जेक्ट वीक है, इन 2 पे लगा दे टाइम। किसी को लगता है तीनों सब्जेक्ट को फोकस करने की ज़रूरत है, तीनों को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम 11 और 12 को है वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे और इन सब्जेक्ट्स पे टाइम देंगे। जिनका एग्ज़ाम कल है वो आज आधा दिन रेस्ट करेंगे और आधा दिन उस सब्जेक्ट को ब्रश अप करेंगे जहां वो कमज़ोर समझते हैं अपने आप को। आज का दिन कैसे बिताएं, इसके ऊपर कल शाम को मैंने वीडियो डाली थी। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देख लीजिए और उस तरीके से दिन आप आज बिताएंगे जिनका कल एग्ज़ाम है। अब जिन लोगों का एग्ज़ाम आज ख़त्म होता चला जाएगा, उनको मेरी सलाह है कि इमीडिएटली वो करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने 3-4 दिन का गैप दे दिया है इसके अंदर। तो करंट अफेयर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे, एक ऐप पे पहुंचेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और 2021 का प्लान ले लेंगे। कूपन कोड AA03 इस्तेमाल कर लेंगे, 10% आपको ऑफ मिल गया। लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन इस सोर्स से आए हैं, इस साल भी बहुत संभावना है कि बहुत क्वेश्चन इस सोर्स से आएंगे। इसको आप जरूर ले लें और आपने इसको बैकवर्ड पढ़ना शुरू करना है। मीन्स पहले जून की पढ़ना है, फिर मई का, फिर अप्रैल का, फिर मार्च का, इस तरीके से। तो पीछे पीछे जाते जाएंगे। आज शाम से हम SBI जूनियर एसोसिएट मेन की तैयारी कैसे करें वो सीरीज़ भी रिज्यूम कर देंगे, तो उसको आप देख के अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। ये उन लोगों के लिए जिनका प्रीम ख़त्म हो गया, जिनका अभी प्रीम बाकी है, वो जो मैंने अभी पहले बताया शेड्यूल वो फॉलो करेंगे। तो हर तरह का कैंडिडेट है चैनल पे। जिसका प्रीम का एग्ज़ाम ख़त्म होता जाएगा वो करंट अकाउंट अफेयर्स और बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की वीडियोस पे फोकस करता जाएगा। 10 से 15 वीडियोस आपने देख लेने हैं बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक को क्लिक करेंगे और इन वीडियोस को देखेंगे। अब अच्छी सेहत कैसे मेंटेन करें ये बहुत ज़रूरी है। इसका भी मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दे दिया है, उसका लिंक दे दिया है। इन वीडियोस को देखिए और हेल्दी रहिए। तो अब इस वीडियो के अंदर हमने सबको कवर किया है। वो लोग भी जो आज एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको क्या करना है, और वो लोग भी जिनका कल एग्ज़ाम है, परसों एग्ज़ाम है और 13 का। अगर आप इस सिस्टमेटिक तैयारी से चलते रहते हैं आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।